हाय एवरीवन, दिस इज सौम्यजित दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दी टॉप लर्निंग्स दैट आई लर्नड throughout my career of 5 years in the software industry, initially as a software engineer and now as an engineering manager. हाल ही में मैं अपने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न्स और SD1s के साथ बात कर रहा था। उनसे बात करके मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे जो मेरी लर्निंग्स है, जो मैंने मिस्टेक्स करे थे, जिससे मेरे को ये सारी लर्निंग्स हुई, या ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड इन दिस फील्ड, मेरे को कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली। वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक लोगों को नहीं पता है. And these are extremely important from growth in the software engineering career के perspective से. So if you are someone who is excited and interested to know my learnings as well as things that you can use to unlock your software engineering career, then you have come to the right video. Before starting, I must say the like target of this video is 1.5 thousand likes. So go ahead and smash the like button. Share this video among your friends and peers as much as possible, and subscribe to the channel if you have not already. This will definitely help the channel a lot. Now, without further ado, let's get started. सबसे पहली चीज जो मैंने एक्चुअल में सीखी है इन द कोर्स ऑफ दिस 5 years और मे बी अ बिट मोर इज दैट मैं जिस भी टीम का जर्सी खरीदता हूँ वो टीम बहुत ही ज़्यादा गंदा परफॉर्म करने लग जाती है. एज सिंपल एज दैट. फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले मैंने KKR की जर्सी खरीदी. 2014 के बाद वो एक बार भी नहीं जीती, नॉट ए सिंगल टाइम व्हाटसोएवर. उसके बाद फिर मैंने शायद पिछले साल आई थिंक सो 21 में ये वाली जर्सी खरीदी थी मुंबई इंडियंस की. इसको खरीदने के बाद मुंबई इंडियंस बॉटम ऑफ द टेबल चली गई. उसके बाद मैंने सोचा बार्सिलोना की जर्सी खरीदेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए. मेसी छोड़ के चला गया बार्सिलोना. तो ये बात तो पक्की है कि मैं जो भी जर्सी खरीदता हूँ उस टीम के साथ कुछ ना कुछ बुरा या गंदा तो होता ही है. बट जोक्स असाइड, लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल वीडियो हियर. सबसे पहली लर्निंग है, आस्क यू आर द ओनर ऑफ योर करियर. So this is something that I have seen that college freshers who are directly joining any product-based company or people who are coming from a service-based company to a product-based company, they do not know that you are the actual owner of your career. उसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपको कब प्रमोशन चाहिए, आपको कैसा वर्क करना है, कौन से प्रोजेक्ट में वर्क करना है, कौन से रोल में जाना है, ये सब कुछ आप ही डिसाइड करते हो. एंड इन सब के डिसीजन के ऊपर आप अपने मैनेजर के साथ बात करते हो. यू आस्क योर मैनेजर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन वर्क विथ हिम इन ऑर्डर टू अचीव देम. तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सिंस यू आर द ओनर ऑफ योर करियर, टू आस्क योर मैनेजर कि अगर मेरे को इस क्वार्टर तक प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास वो सारे डेटा पॉइंट्स हो जिससे कि मेरा प्रमोशन हो जाए. यहाँ पे आने के बाद, चलो आने से पहले कुछ कंपनीज भेदभाव करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम एंड व्हाट नॉट. बट एक बार आप अंदर घुस जाते हो, चाहे एज अ लैटरल आ रहे हो या एज अ फ्रेशर आ रहे हो, चाहे किसी भी कंपनी में आ रहे हो, उसके बाद आपका जो कॉलेज टियर है, आप कौन से कॉलेज से हो, कौन से ब्रांच से हो, क्या पढ़ के आए हो, कुछ नहीं मैटर करता. व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली इज वेदर और नॉट यू आर परफॉर्मिंग इनसाइड द कंपनी at the next level to get you promoted. Whether or not you have all the relevant data which backs your performance so that you can get promoted to the next level. तो ये कभी मत सोचना कि मैं टायर 3 से हूँ और वो बंदा टायर 1 से है तो इसलिए उसका प्रमोशन पहले होगा. बिल्कुल नहीं. आप परफॉर्म करो, आप अपने मैनेजर के साथ बात करो, अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल. Ask your manager to give you projects that will help you get promoted in the next level and then get promoted in the next level at the desired quarter. Point number 2 जो बहुत लोग मिस करते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, be it service based, be it product based, be it established product based, doesn't matter. One thing that many people miss out is that goodbyes are difficult but necessary. अर्थात अगर आप किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में काम करते इतने कंफर्टेबल हो गए कि देयर इज नथिंग न्यू दैट इज लेफ्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यू आर नॉट एबल टू चैलेंज योरसेल्फ इनफ टू वर्क देयर, और you become the smartest person in the room, then my friend, it is time for you to change the room. जिसका मतलब, try changing the project, try changing teams, try taking on new roles that excite you, but
चेंज, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं चैलेंज करोगे देन वन थिंग फॉर श्योर जो होगा इज दैट यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो in this industry. This is a very brutal industry, to be honest, and if you do not grow you do not survive. So goodbyes are difficult but necessary. Change is the absolute constant that will always remain in your life. Number 3, know whom to ask, what to ask, when to ask. As a software engineer, if you master this skill, then absolutely you will be able to thrive and grow in your career as much as possible. हमें ये पता होना चाहिए कि हम कब कितने पानी में हैं. As a software engineer, one thing that I always shout at the top of my lung is that we should be cognizant of the fact that हमको सारी चीजें पता नहीं हो सकती and there might be coming a time where I might require help from someone else, and you should be able to recognize that and approach other people to help you out. ऐसा भी कभी कभी लगता है कि अगर मैं किसी को कुछ पूछूंगा तो उनको लगेगा कि मुझे नहीं आता, बट यार that is still okay than not asking help from anybody and not being able to do it at the end of the deadline. लोगों को उससे ज्यादा बुरा लगेगा अगर आप हेल्प मांगे भी नहीं एंड आपसे हुआ भी नहीं. तो अंडरस्टैंडिंग कि कब आपको हेल्प की जरूरत है, कितना आपको हेल्प चाहिए और किससे आपको हेल्प मांगना है is very important. Next is optimize for learning at the start, rest will follow. तो बहुत बंदे पूछते हैं कि X कंपनी में जाना चाहिए या Y कंपनी में जाना चाहिए. Y कंपनी हमें 3 लाख एक्स्ट्रा दे रही है या 5 लाख एक्स्ट्रा दे रही है, X कंपनी हमें कुछ कम दे रही है बट X में प्रोजेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, या X कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, या X कंपनी में अगर मैं गया तो मुझे बहुत अलग अलग वैरिड जगहों में काम करने का मौका मिलेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट Y में नहीं मिलेगा. तो हमें कौन सा जाना चाहिए? कई बार लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे पैसे देखते हैं, जो कंपनी ज़्यादा पैसे दे रही है उसमें चले जाते हैं. हैविंग सेड दैट, दिस इज अ गुड वे टू डिसाइड, बट दिस शुड नॉट बी योर ओनली वे और ओनली क्राइटेरिया टू जज अ कंपनी. First and foremost, as a fresher at least, one thing that you should focus on more than earning a bit extra is that कहाँ पे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जितना तुम एज अ फ्रेशर सीखोगे उतना ही तुम ग्रो करोगे, उतना ही तुम्हें आता होगा और उतना ही तुम फ्यूचर में जाके उसके डिविडेंड्स भोग कर पाओगे. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग बहुत अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं बट मेरे को मैसेज करा है आस्किंग कि यार कंपनी में LLD HLD तो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, हम लोग ऐसे ही काम करे जा रहे हैं, पैसे तुम अच्छे खासे मिल रहे हैं बट मुझे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा. दैट माई फ्रेंड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन. क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसे तो ठीक ठाक मिल रहे हैं बट तुम्हें सीखने को उतना कुछ नहीं मिल रहा. अगर तुम्हें सीखने को उतना कुछ नहीं मिल रहा तो बाहर अगर आप देखने जाओगे तो आपको दूसरी कंपनी उतना देगी नहीं. अब दूसरी कंपनी उतना नहीं देगी तो आप फिर बाहर भी नहीं जाओगे एंड इट बिकम्स अ विशियस साइकिल, इट बिकम्स अ गोल्डन हैंडकफ, जिसको हमें अवॉइड करना है. हमेशा एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर एट लीस्ट you should always optimize for work over money until and unless money का difference is like 15-20 लाख है, उससे ज़्यादा है, या whatever you consider a big amount, right? अगर उससे ज़्यादा है on a year to year basis money का difference, then I would say definitely choose the one which has a higher package. But apart from that, for most intents and purposes, अगर ये delta इतना ज़्यादा नहीं है, then in a career of let's say 15, 20, 30 years, you earning 5 lakhs less for a year or two will not matter at all. Next is research, reading and learning is much greater than coding. तो जैसे ही अपन जनरली ये impression I would say freshers का ज़्यादा होता है कि as a software development engineer, as a software engineer आप सिर्फ दिन भर कोड ही करोगे और कुछ नहीं करोगे. And to be honest, coding will probably take around 30%, 20%, 30% of your actual work time. उसके अलावा apart from coding you will be involved in reading, learning, researching, designing things. And software engineering is a career. इतना ज़्यादा जो पे मिलता है, it is because it is a very demanding career for sure. And it is a career where you have to use each and every day the things that you are learning, the things that you are reading. You have to use your brain each and every day and learn on the go as much as possible, as fast as possible. And that's why all of these companies are paying you a good amount of salary as well, in comparison to any other field for that matter. Definitely आप कोड करोगे बट धीरे धीरे जैसे आप ग्रो होंगे आपको ये रियलाइज होगा कि राइटिंग कोड is easy. Making designs that produce efficient code is very difficult. Next is, it is absolutely okay to ask for what your value is or what you think
your value is. Always. It is absolutely okay to negotiate. It is absolutely okay to get multiple offers. But one thing that is not okay is that you get multiple offers and then you decide to reject some of the offers at the last date. But again, given the current situation, market situation in hand, जहाँ पे कई सारी companies do rescind offers after giving you, I cannot blame the candidates as well for doing that, right? अगर तुमको लगता है कि you are being underpaid, then you should go ahead and ask for more. As simple as that. And more often than not, people are receptive to these things as long as it is done in good faith. If you are a good, valuable resource in the team, then definitely people would want to retain you. Next is, and that is very important, if you are looking to change your company, or if you are looking to change your team, or if you are a fresher who is coming into the company, you are anyone who is entering a new team, one thing that you should always keep in your mind is that keep your ego aside and respect everyone who is bringing something to the table for their experiences. Respect everyone for their opinions. Respect everyone for what they contribute. And this is very important अगर आप किसी नई टीम में जा रहे हो. Absolutely important. You can be an SD2, you can be an SD3 for that matter. And किसी नई टीम में कोई SD1 है, you should always know that since you are new to a company, you are new to a particular team, you will not know how the team functions, you will not know all the flows in the team, you will not know what are present and what are not present, how and why a particular thing was coded into the system. And an SDE1 present in that team, as an SDE2 present in the team, or anyone who is basically present in the team before you will definitely have a better context about the system, will definitely have a better context and idea about the processes that are followed by the team. So don't bring your ego in it. Try to learn from anyone who is present in the team as much as possible. Try to be grateful for those people who are taking their time out and making sure that you get the correct information, you learn, who are mentoring you, and try to learn from everyone. And last but not the least, imposter syndrome is real and it is good. So अगर आपको पता नहीं होगा, imposter syndrome is nothing but वो feeling जो आती है कि when you start working in a new team, when you start working in a new company, or maybe you are going into your first company, or you are a final year student जो अपने पहले जॉब में जा रहा है, and they feel that they don't belong here, बाकी सब are much smarter than you, and you will not be able to perform at their level, and people will find out that you don't know anything at all and will fire you. This syndrome is known as imposter syndrome, और ये सबको होता है. Each and every one that I have talked to till now has had this, and this is very real and this is very good. क्योंकि अगर खुद की फटेगी नहीं तो अंदर से आएगा कैसे कि पढ़ना है. एग्जाम में कब पढ़ते थे? एग्जाम के एक दिन पहले ही तो पढ़ते थे, जब हालत एकदम खराब, सिलेबस का अता पता नहीं, दोस्तों से पूछ के पता चल रहा है क्या सिलेबस है क्या नहीं, और फिर कहाँ से पढ़ना है वो पढ़ रहे हो एग्जाम के पहले, और तभी इफेक्टिव पढ़ाई भी होती है. इसीलिए अगर इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यू डू नॉट बिलोंग हियर, नो वन थिंग, एवरीबडी हैज फेस्ड दैट, everybody has that syndrome, be it me, be it you, be it someone else for that matter, be it your manager, be it my manager for that matter, everyone, whosoever is present, everyone has gone through that phase, and it is a good thing because that will enable you to learn, that will keep you humble, that will allow you to grow as much as possible. And anyways, you do not want to be the smartest person in the room, क्योंकि point number 1 क्या था? If you become the smartest person in the room, you are in the wrong room. I really hope that you like this video. If you want me to elaborate on any of the points in detail with my own experiences and other people's experiences, then do comment down below. I'll keep making more detailed videos around it. I really hope that I am able to guide you in your journey as a software engineer या software engineer, product based company, इन सब में घुस तो चलो जाएंगे, DSA कर को राके, LLD HLD थोड़ा कर को राके घुस तो जाएंगे, बट असली जो टेस्ट है वो उसके बाद शुरू होता है. घुसना इज रिलेटिवली ईजियर, बट ग्रोइंग इन अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, growing in your career is the more difficult part. And I really hope that with my experiences, my mistakes and my learnings, I will be able to guide you in your journey ahead as much as possible. Do stick around with my channel. I will definitely be putting out more such interesting insights and content for software engineers out there, and as well expand my channel
across different verticals in a software company, be it software engineer, be it product managers, be it engineering managers, DevOps, and much more. And definitely, I will be bringing you a lot of more insights from the industry. Do comment down below what different kinds of videos you would want me to make. I'll gladly make them as much as possible. The like target for this video is 1.5 thousand likes. So go ahead and smash the like button. Subscribe to the channel if you have not already. Hit the notification bell and share this video among your friends and peers. It will definitely help the channel a lot. This is your host Soumyajit bidding goodbye. Das Vidania.